Now we are done. We are done with the lead generation. How do the lead come? So how do you have to allocate the leads? How do you have to install the WhatsApp business? And at the end of this session, once you are done with the conversion training, conversion brief training, you just go and watch the WhatsApp video, and there will be a lot of other videos also. A fresh sales video will be there to understand in deep, if you want, how does it completely entirely work, and it can be done. So we are done with all these three things, right? And once it is done, let's just proceed on to the very crucial element of this, which is how do you pitch the client, to pitch your work to the client. How does it has to happen, and what is the process behind that, and how what is how we have been doing it. And once you start to understand that, you'll find it a piece of cake coming up to you. So wedding lead. So when it comes to a wedding lead, you'll find there are different stages for that. This is stage one, and after that the stage 2 is the follow up. We have to do the follow up. So in this session we are going to understand the stage 1, and if the video gets too long, I'll just break up in between, so and we'll move on to the next part. Right, so coming on to this thing, what is actually, how do you have to do it? So let me just fold it completely and just come over here. Yes, now you'll come to better understand it. So the first step that goes in converting the lead is calling the client. How do you have to call the client, and what are the calling etiquettes? Actually, you need to very deeply understand this. How do you have to call the client? There are phone etiquettes, there are calling etiquettes, and if you do not have those, the first impression that you're going to give to your client is might be very bad. And you are actually, when you're calling the client, you are representing Grey White Studios, and if you are not representing Grey White Studios on the call in a very professional manner, the client would simply understand that this is not I'm looking for. So when I started the business in the first year, when I used to convert the client, how was I able to convert so much of clients? Was only because I had very great communication skills. I was so super with my communication that the client, even I did not have much experience, but through my calls, through my discussion, I used to generate a kind of a scenario, generate a kind of impression that the client would see that this is looking a professional guy. Let's just get the work from this guy, right? So this is the kind of calling etiquette I'm talking about, that you need to master, that you need to learn, right? So coming on to the first point, calling the client. How do you have to call the client? Again, I'll make it very so you just understand that. I'll just fold some notes, and we'll simply go on to this. So first option is the calling etiquette. What is the calling etiquette? First calling etiquette. So you have to be a friend to the client and not a service provider. You do not have to act like a LIC guy or a credit card guy, calling up the client saying, sir, I'm calling from Grey White Studios. आपने रिक्वेस्ट प्लेस की थी वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में, सर आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? this is a bullshit, bloody, and a very traditional way of of having a conversation with the client. And you are not, if you are going to talk this way, you are not going to get differentiated from the entire market, from the other people that they are doing. You do not have to do that. You have to be a friend to the client and not a service provider. And for the calling etiquettes also, you'll find a separate video shot up in detail. Just go and watch that. At the end of the session, you'll find the list of other videos that you have to watch, and you have to watch that. Now the second point is talk to the client with his or her name. You do not have to call the client sir or madam. You do not have to do that. There's a very deep psychological thing that happens behind that, and if you do that, you'll not find much engagement happening on the end of the client. Once you start to say sir, madam, the client, there's a formal approach that builds up, and once that builds up, there's a concern onto that. There's a very deep concern onto that. Just talk to the client with his or her name. Just say, sir, agar Sandeep naam hai, you just directly say, Sandeep, what I'm going to do, I'm going to share some wedding films with you, and just watch that. एक बार आप देखो, आपको बहुत पसंद आएंगी. So this happens. Actually, I've seen the results coming up when you talk to the client by taking directly the name, right? So this happens. Now moving on to the second part, how you have to do that. So let me just do one thing fast. I'll just give it a number, and so that what happens, you do not bombard with a lot of information over here, and just see all the things in point wise. I should have given it number. All right, so 1 second.
5th, this is 6th, this is 7th. One second, this is 7th. Yes, now I'll just fold all the notes, and now we'll have it point wise. So this is one, now this is second. Now what is the second thing that is going to go up? When you call the client, I'll just show you right here right now how to have to call the client and what kind of etiquettes do you have to practice. And when you call the client, do not talk with on their functions, and do not take the details which you function details, that date details. Do not have a discussion on that. Although client would ask you to give their details, wedding details with you, but there is a way to go with that. You do not have to follow that. Do not ever take the function details of the wedding function on the call with the client, so just do not. What you have to discuss on the call is the discussion on their expectations with the wedding film. I'll just give you a live demo right here right now in Hindi, so that you can understand how do you have to call the client and how do you have to get it done. So when you call the client, suppose the client name is Sandeep, how do you have to talk to them? It's very simple. So call Sandeep. Hello Sandeep, मैं अब्दुल्ला दिस साइड, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ग्रे वाइट स्टूडियोज़. आपने रिक्वेस्ट प्लेस किया था हमारे एडवर्टीजमेंट के ऊपर. यू आर लुकिंग फॉर अ वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग टीम, राइट? हाँ संदीप, करेक्ट. सो संदीप, एक बार आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी वेडिंग डेट्स क्या हैं. अच्छा, योर वेडिंग डेट इज़ 25th of November. ओके, परफेक्ट, गुड, ग्रेट. One thing that I would like to know, Sandeep, just do not tell all the function on the call. Once you have, what you have to do actually, I'll send you a little form details. मैं आपको फॉर्म डिटेल भेजूंगा, फॉर्म लिंक भेजूंगा. उसके अंदर सारी वेडिंग फंक्शंस की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, बिकॉज वेडिंग फंक्शन की डिटेल्स सिर्फ फंक्शंस नहीं होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आप कॉल पे नहीं ले सकते. उसके लिए पूरा एक छोटा सा फॉर्म हमने बनाया हुआ है. वी हैव बिल्ड अप दैट फॉर्म, एंड उसको जब आप फिलअप करोगे तो हम लोग को सारी डिटेल्स रिटन में मिल जाती हैं, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है. अभी हम लोग कॉल पे बात करेंगे आपकी वेडिंग फिल्म्स के बारे में. आपको किस तरीके का काम आप देख रहे हैं, किस तरीके की फिल्म्स आपको पसंद है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको. हाँ, तो कुछ देखा हुआ है आपने किस तरीके की फिल्म्स आपको पसंद आती हैं, वो ट्रेडिशनल कैंडिड ज़्यादा पसंद आती हैं, या फिर आपको वेस्टर्न सॉन्ग्स की फिल्म ज़्यादा पसंद आती है जिसमें इंग्लिश सॉन्ग्स यूज़ हुए हों. आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए. अच्छा, आपको हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स ही रखने हैं ज़्यादा. अच्छा, ठीक है, नो वरीज, दैट कैन बी डिस्कस्ड. संदीप, मैं आपको क्या काम करता हूँ, व्हाट आई विल डू सिंपली, मैं आपको ना अभी कॉल पे हमारी कुछ बेस्ट लेटेस्ट प्री वेडिंग फिल्म्स भेजता हूँ, बहुत अलग अलग 2 से 3 4 वेडिंग फिल्म्स भेजता हूँ, और आप उसको देखो. आप एक देखने के बाद मुझे बताओ कि आपको उसमें से कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई है, सो दैट हम लोगों को पता लगे कि ये वाली फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, और हम उस तरीके से शूटिंग स्टाइल को आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को, टेस्ट को समझ पाएँ. तो अभी जस्ट आफ्टर दिस कॉल ऑन द व्हाट्सएप नंबर आई विल शेयर द वेडिंग फिल्म्स विद यू, एंड द फंक्शन फॉर्म डिटेल्स, उसमें आप फंक्शन डिटेल्स डाल दीजिए, एंड और फिर हम लोग आपको कोटेशन शेयर कर देंगे, राइट? हाँ, ठीक है संदीप, दैट्स इट. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. आई एम जस्ट गोइंग टू आफ्टर दिस कॉल शेयर सम वेडिंग फिल्म्स एंड शेयर द कोटेशन टेम्पलेट विद यू. येस, दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. This is the way you have to call the client simply, and do not make the call unnecessary so long, because it might not work. Just make it a very crisp and clean, and just talk to the point simply. And see, when you are having the conversation with the client, you do not have to go in very detail on the discussion part. Make sure that you just give the important information, you just wind up the call, right? And if you're going to take up the time, not going to work, just going to waste it your time. And once you are done with this, you just have to go to the client on WhatsApp and just send the work to them. This one point that I missed it completely in this is going to be, I'll just make it 3, and I'll just make it 3-1. What you have to ask when you are on the conversation with the client, just ask them, sir, confirm them if this number is available on WhatsApp, the number that available on WhatsApp. So you have to say that, sir, ये जो नंबर से आप मैंने कॉल किया आपको, ये नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, एंड द क्लाइंट वुड से yes, then you just if he or she say no, says no, you just take the WhatsApp number. Now the next part is educate them that you are just sharing the function details form on the form for the quotation. Yes, that is what I had a conversation in the call, कि आप उनको बताइए कि
कि हम आपको एक फॉर्म शेयर करेंगे, उसमें आपको सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है अपनी, और उसमें छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जो फ़ोन पे नहीं ली जा सकती हैं, तो आप फॉर्म में फिलअप कर दीजिए एंड आर टीम विल गेट इन टच विद यू एंड विल शेयर द कोटेशन विद यू. दैट्स इट, वेरी सिंपल. Coming on to the fourth point, that is what we just had a conversation. Meanwhile, I'm going to share the wedding films with you, and you just watch the wedding films, और जो आपको उसमें से पसंद लगे आप हमको बता दीजिए, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग विल जस्ट हैव अ डिस्कशन. अब सी, the main objective of the call actually is not to give information, overload the customer. No, not at all. Once, if you are having the conversation with the client, have a little smile. I'll just give you another demo, once more demo, so you get to understand. There are people who just go very very serious while talking with the client, very serious, very formal. Just do not go that. I'll just give you another demo. So suppose the name is Tarvinder. Suppose the name is Tarvinder. I'll just call Tarvinder once again. I'll just focus on this part only once again, right? So hello, is this Tarvinder? यस, तरविंदर, आपने रिक्वेस्ट प्लेस किया था हमारे फेसबुक एड्स के ऊपर फॉर योर वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग. आर यू लुकिंग फॉर दैट? ओके, परफेक्ट. सो तरविंदर, व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली, वो actually someone has come, so I just got distracted. I'm just shooting it once again, so here it goes once again. So just call the client. So it will be something like this. Hello, is this Tarvinder? तरविंदर, अब्दुल्ला दिस साइड, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ग्रे वाइट स्टूडियोज़. आपने रिक्वेस्ट प्लेस किया था ऑनलाइन अपनी वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म के लिए. हाँ जी. करेक्ट. सो तरविंदर, आप थोड़ा सा एक बार बताइए कि कब है आपकी वेडिंग कब है आपका? ओके, परफेक्ट. योर वेडिंग इज़ ऑन 25th of November. ग्रेट. एंड इवनिंग वेडिंग है, राइट? हिंदू वेडिंग. yes, perfect. तरविंदर, जस्ट डू नॉट गिव ऑल द फंक्शन. अभी आप फंक्शन डिटेल्स अगर हम लेने लगेंगे तो बहुत लंबा है, उसके लिए बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जो कॉल पे नहीं ली जा सकती हैं, बिकॉज क्या होता है कि छूट जाता है कुछ ना कुछ डिटेल्स. और उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म है, गूगल फॉर्म. उसमें हमने एक एक चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चीज़ें चाहिए. एंड वंस यू फिल अप दैट फॉर्म, हमारे पास अब रिटर्न में आ जाता है, और कुछ कन्फ्यूजन नहीं होता. तो कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ है, कॉल्स पे मिस हो सकती हैं चीज़ें, राइट? सो बट अभी हमारा कॉल का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपसे डिस्कस करूँ कि आपको किस तरीके का वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्मिंग पसंद है. तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं, राइट? तो मुझे बताइए, कुछ रिसर्च वगैरह किया हुआ है आपने कि किस तरीके का वेडिंग फिल्म आपको पसंद आता है? अच्छा, आपने नहीं किया हुआ है. चलो मैं आपको थोड़ा सा आई जस्ट हेल्प यू. थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है. जनरली क्या होता है, क्लाइंट ना रिसर्च कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उनको पता होता है. नो वरीज, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, बहुत तरीके की वेडिंग फिल्म्स होती हैं. एक होती है वेस्टर्न टच वेडिंग फिल्म्स, एक होती हैं अपनी इंडियन स्टाइल वेडिंग फिल्म्स. वेस्टर्न टच में थोड़ा सा वेस्टर्न सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स यूज़ होते हैं, और हिंदी में कुछ बॉलीवुड कोक स्टूडियो काइंड ऑफ थिंग कवर सॉन्ग्स यूज़ होते हैं. हाँ, करेक्ट, सही समझे. तो आपको कवर सॉन्ग्स टाइप ज़्यादा पसंद आते हैं. हाँ, एक्चुअली में ये ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आजकल, एंड वी हैव शिफ्टेड आवर शूटिंग स्टाइल ऑन टू दिस ऑल्सो. अभी मैं क्या करता हूँ तरविंदर, मैं आपको ना 3 to 4 वेडिंग फिल्म भेजता हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरीके की वेडिंग फिल्म्स आपको पसंद है. आपको अपना टेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है. हाँ, आपको बहुत ज़रूरी है आपका अपना टेस्ट जानना. तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उनको देखो. मैं आपको बहुत सारी फिल्म देके ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा. बेस्ट सिलेक्टेड 3 to 4 वेडिंग फिल्म भेज रहा हूँ, एंड आप देखो उसको, और जो आपको पसंद आती है, लेट अस नो कि आपको ये पसंद आ रहा है, एंड सो दैट वी मस्ट गेट क्लियर कि आपको किस तरीके की वेडिंग फिल्म पसंद है. हाँ, तो ये नंबर आपका व्हाट्सएप पर है, राइट? अच्छा, नहीं है, आप एक बार मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर भी. इसी नंबर पे तो हाई कर दीजिए, मुझे बता दीजिए आप व्हाट्सएप नंबर, मैं नोट कर लेता हूँ. हाँ, परफेक्ट. ठीक है, दिस इज़ नंबर. ओके, 8988868888. परफेक्ट. अभी मैं क्या करता हूँ, आपको आफ्टर दिस कॉल, जस्ट आफ्टर दिस कॉल, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द वेडिंग फिल्म्स एंड द फंक्शन डिटेल्स फॉर्म. आप उस फंक्शन डिटेल्स को जस्ट अभी फिलअप कर दीजिए, ताकि हम विद इन विल ट्राई टू गेट द कोटेशन डन विद टुडेज ओनली, एंड आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर सकूँ. हाँ, ठीक है तरविंदर. ग्रेट. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू so much, and thank you so much for your time. Done. That's it. Thank you so much. See what you'll see in this entire conversation, that I had a complete smile on my face, and this happens actually जब आप कॉल पर किसी से बात करते हैं, तो जो स्माइल होती है ना आपकी, वो ट्रांसफ़र हो जाती है उधर की साइड. दिस हैज़ बीन प्रूवन. सो जस्ट हैव अ स्माइल while having the conversation with the client, and this is going to give you very very great results when you are going to have the conversation with the client with a smile. ये होता है, it gets transferred. I have seen that. I have
experience that. Right, now coming on to the fifth point, I'll just fixing a meeting and inviting them to the studio. Yes, after you have sent the quotation to the client WhatsApp, after you have done follow-ups with them, you just send the quotation to the, you just fix a meeting with the client and invite them to our studio. Now बहुत सारे clients लोग आपको बोलेंगे कि हम लोग स्टूडियो नहीं आना चाहते बिकॉज आपका स्टूडियो रिमोट एरिया में है, दूर है. तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ. आपको उनको, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपसे कैसे मिलना हो सकता है, तो आप उनको बोलिए कि सर हमसे मिलने के ना देर आर टू वेज एक्चुअली. वन इज़ आप हमसे हमारे CP ऑफिस में मिल सकते हैं, दैट इज़ द मीटिंग ऑफिस. हमारे 2 ऑफिस हैं दिल्ली में और एक ऑफिस है हमारा शादरा में. बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शादरा वाले ऑफिस में आओ. रीज़न बीइंग कि हमारे शादरा वाले ऑफिस में सारे IMAX एप्पल के सिस्टम्स लगे हुए हैं और वहाँ पे सब कुछ एडिटिंग सेटअप वहीं पर है और एक एक चीज़ वहीं पर होती है, एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन. CP में हमारा सिर्फ मीटिंग ऑफिस है. तो अगर आप आओगे तो हम आपको वो फिल्म्स नहीं दिखा पाएंगे जो रिसेंटली एडिट हो रही हैं, या बड़ी स्क्रीन पर फिल्म्स नहीं देख पाओगे आप. तो आप अगर आप 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो इतना तो पेन आप थोड़ा सा आपको लेना होगा. आप हमारे स्टूडियो आओ, और ये रिमोट एरिया में है, ये अंडरस्टैंडेबल है, मैं मानता हूँ. ये इस वजह से क्योंकि जो हमारा दूसरा ऑफिस है वो हमारा रेंटेड नहीं है, हमारा अपनी प्रॉपर्टी है. तो वो कॉस्ट जो हमारा सेव होता है उससे हम लोगों को डिस्काउंट दे देते हैं. राइट, सो दिस इज़ द रीज़न. सो आई वुड सजेस्ट यू टू कम टू दिल्ली, टू कम टू शादरा ऑफिस. वहाँ पे आओ आप, और हम आपको सारी वेडिंग फिल्म दिखाते हैं. मैं आपको स्टूडियो का टूर भेज देता हूँ कि हमारा स्टूडियो कहाँ पर है और कैसा है अंदर से, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कैसे पीछे काम होता है. राइट, सो जब क्लाइंट आपसे ऐसी बात करे तो आप उसको ये सॉल्यूशन दीजिए कि फिर क्या है. नाउ वी हैव 2 ऑफिसेज दैट आई जस्ट डिस्कस. वन इज CP विच इज़ मीटिंग ऑफिस, द अदर वन इज एडिटिंग सेटअप जो शादरा में है. कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, व्हाई डू यू वांट टू विजिट द स्टूडियो. क्लाइंट आपसे बोलेगा कि क्यों आए, मतलब हम बाहर भी मिल सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं. तो एक चीज़ बोलनी है कि सर आप 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और आपको इतना ड्यू डिलिजेंस तो करना होगा कि आप अब कंफर्ट जोन में, मतलब किसी आसपास लोकेशन ना मिलके एक्चुअल में प्लेस देख कर आओ कि आप कहाँ, किन से आप फिल्म, अपनी वेडिंग फिल्म करा रहे हो. राइट, हु इज़ गोइंग टू बी योर वेडिंग फिल्मर. एंड अगर आप कई केसेस में क्या होता है, हम लोग आप लोग फ्रीलांसर्स को ले लेते हैं लेकिन उनके पास एडिटिंग सेटअप नहीं होता, जिसकी वजह से वो काम कंप्लीट करा के टाइम पे नहीं दे पाते हैं. बट हमारे पास पूरा कंप्लीट एडिटिंग सेटअप है. आप एक बार आके देखिए, और आप इतना अगर खर्च कर रहे हैं तो इतना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी. बिकॉज अगर हम आपके यहाँ भी आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो लैपटॉप में वो मज़ा नहीं रहता फिल्म्स दिखाने का, साउंड का पता नहीं लगता, क्वालिटी का पता नहीं लगता, रेजोल्यूशन का पता नहीं लगता है. बट व्हेन यू जस्ट मीट इन पर्सन विद अस, वी शो यू एवरीथिंग ऑन अ बिगर स्क्रीन. दैट इज़ व्हाई यू वांट टू विजिट आवर स्टूडियो. सो दिस इज़ एक्चुअली, see, these 3 parts, 5, 6 and 7, fixing the meeting with the client and educating about them, our offices and visiting. ये पहली कॉल पे बात नहीं करनी है आपको, ये बाद में होती है बातें. ठीक है, सो इन दिस वन वी आर डन विद द ऑप्शन कॉलिंग द क्लाइंट. कैसे आपको क्लाइंट से बात करनी है, कैसे आपको काम भेजना है, एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू मेक इट डन. Right, and if you have any questions, if you have anything to ask, just type in the comment box below so that मुझे पता लगे कि आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने एंड से मिस कर गया और आपके मन में डाउट आ रहे हैं, और उन डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको चीज़ें उस तरीके से क्लियर नहीं होंगी. राइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट.